Assurance from the state government for women left out of the Subhadra Yojana. Deputy Chief Minister Prabhati Parida has categorically stated not a single eligible woman will be deprived of the scheme's benefits. Chaired a high-level review meeting today, the Deputy CM said several genuine beneficiaries had earlier been excluded due to missing ration cards, incomplete KYC, or documentation lapses. Acting on recent complaints, the Women and Child Development Department has now decided to cover all left-out beneficiaries. Parida announced fresh measures for transparency. Data on living and deceased beneficiary will be now obtained directly from the Health Department, replacing earlier reliance on ration card updates. In addition, field verification will be conducted for nearly 2.85 lakh women who are yet to receive their 3 installments under the Subhadra scheme. Senior officials from multiple departments participated in the review to plug loopholes in the scheme's implementation. The Deputy CM has assured women across Odisha those eligible will definitely receive their entitled assistance and no one will be left behind. किछि मृत लोक जो माने जीवित अछंती तांकर मृत आसीथिला बोली आसीथिला तार निष्पत्ति हिला कि हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ देछि रिपोर्ट सेही आधार रे आमे मृत को मानिबो एवं जो मानकर रेशन कार्ड रो मृत्यु आसीथिला हमको से मानकु आमे अलाइव बोली धरिबो हेल्थ डिपार्टमेंट को छाड़ी देले मृतर स्टेटमेंटटा आमे रेशन कार्ड आधार रे नबुनु बा से डिपार्टमेंट आधार रे नबुनु आमे हेल्थ डिपार्टमेंट आधार रे डेथ टाकू मानिबो बाकी फील्ड इंक्वायरी 2,85,000 बेनिफिशियरी हब जो माने पाई नाहंती थर्ड किस्ती से मानकर 15 दिन भितरे ये फील्ड इंक्वायरी फिनिश हम एवं आउ गोटे सबुठु बड़ कथा हैला जो ग्रेवांस पोर्टल खोलिबो होउथिला एबे सेटा 2 दिन परे से मॉड्यूलटा ओपन हबो आउ किछि कथा जोटा माननीय मुख्यमंत्री नजर को निया जिवो जेंति स्कॉलरशिप रो इश्यू अछि वाहन रो इश्यू अछि एवं आईटी रिटर्न्स रो इश्यू अछि नहीं सरला परे डिपार्टमेंट बेनिफिशियरी मानक पाइन जहाँ बेनिफिटेड हबो सेटा को घोषणा